Welcome to virtual celebration of 74th Independence Day. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. Vande Mataram. They were queens, they were warriors, they were revolutionaries, they were messengers, supporters, and of course, many a leader. India's freedom struggle gave birth to countless strong and fearless women. Each has played a unique part in the struggle, and every one of them will remain etched forever in our hearts and our history. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. On this Independence Day, we present a tribute to our freedom fighters. We tried to portray them as best as we can, and we respect their struggles, and let's make them our inspiration this Independence Day. रंग करते हैं हम कि समुद्र हो हमारी जागृति का क्षण, हो चुका जागरण, अब देखो निकला कितना उज्जवल दिन. On the occasion of 74th Independence Day, I am portraying the role of Sarojini Naidu, the Nightingale of India. I was the proponent of civil rights and a renowned poet and a lyricist. A country's greatness lies in its undying ideal of love and sacrifice that inspires the mothers of the race. I wish you all a very happy Independence Day. Thank you. Savitribai Phule is considered one of the India's early feminists. She was instrumental in opposing child marriage and caste discrimination. जय हिंद, जय भारत. देशवासियों, आज मेरी तरफ से यानी इंदिरा गांधी की तरफ से सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व पर शोक नहीं, अपनी आज़ादी का उत्सव मनाएं. हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के सपने को पुनर्जीवित करेंगे. अपने लोग, अपना राज, अपना गौरव, अटक से कटक तक संपूर्ण भारत, भारत माता की जय. आई एम प्लेइंग रोल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे. राजकुमारी अमृत कौर आहलूवालिया स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री थी. वे स्वतंत्र संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी. वे महात्मा गांधी की अनुयायी तथा कुछ वर्षों तक उनकी सचिव रही. उनका जन्म लखनऊ में 2 फरवरी 1889 में हुआ. यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी. इन्होंने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी. इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1964 में हुई थी. आजादी की इन लाइनों को हम नहीं भूल पाएंगे. अब भी दिन का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए, बेकार हो जवानी. जय हिंद, जय भारत. Kasturba Mohandas Gandhi was an Indian political activist. She married Mohandas Gandhi in 1883. Kasturba died in 1944. In association with her husband and son, she was involved in the Indian independence movement in British-ruled India. She was very influenced by her husband Mohandas Karamchand Gandhi or Mahatma Gandhi. Begum Hazrat Mahal, also called as Begum of Awadh, was the second wife of Nawab Wajid Ali Shah. She rebelled against the British East India Company during the Indian Rebellion of 1857. She was a very brave woman in the male-dominated society. She finally found asylum in Nepal, where she died in 1879. मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ और जरूरत पड़ने पर
मैं ये सब प्यार भी कर सकता हूँ और इसी को देश के प्रति सच्चा बलिदान कहते हैं। My name is Annie Gupta. I born on 1st October 1847 in London. मैं कस्तूरबा गांधी। जय हिंद, जय भारत।